Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss Golgi apparatus. So let's move to the whiteboard. Golgi apparatus. First of all, it's discovery. So Golgi apparatus, it was discovered by Camillo Golgi in April 1898. As far as Camillo Golgi is concerned, Camillo Golgi was an Italian biologist and pathologist. He was famous for his work on nervous system. And that's why he was also awarded a Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1906, as we have read this in the previous grades in grade 9. So that was just a little bit short introduction of Camillo Golgi. So while he was doing some staining procedures, ये basically जो न्यूरॉन्स हैं यानी नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनको स्टेन करने का एक मेथडोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसी दौरान ही फाउंड रेटिकुलर नेटवर्क इनसाइड द न्यूरॉन्स. तो बेसिकली जो गोल्जी apparatus है इट वाज डिस्कवर्ड विद इन द न्यूरॉन्स. क्लियर, नर्वस सिस्टम के अंदर इसको डिस्कवर किया गया. So if we try to define Golgi apparatus, it is a set of flattened membrane bounded stacks called cisternae. सिस्टर्ना हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने बात की थी कि उनसे वो नेटवर्क ऑफ चैनल्स और उसके विच आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन आइदर स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स जो होती हैं. ठीक है, सो दैट वाज सिस्टर्नाe एज वेल एज इन गोल्जी apparatus दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो इसी तरह से ये फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड जैसे एक थैली है उसको आप फ्लैट कर दो, फ्लैट का मतलब ऐसे पिचका दो, एक थैली उसको आप पिचका दें और विच इज़ बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन. क्लियर, सो दैट इज़ उस एक थैली को जब पिचका के हम इसको करते हैं, सो दैट इज़ बेसिकली इट फॉर्म्स अ सिंगल सिस्टर्ना. सो इट इज़ अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स. एक स्टैक होता है, मल्टीपल सिस्टर्न आर प्रेजेंट. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द गोल्जी apparatus. नाउ इट्स components. Components of Golgi apparatus. So there are two major components. Number one, the Golgi cisternae,
So what are Golgi cisterns? We have discussed. So these are flattened. Flattened का मतलब पिच के हुए, flattened stack of sacks bounded by single membrane. So as we have discussed earlier in the previous lectures that Golgi apparatus is a single membrane bonded organelle. Clear? It comes under the heading of single membrane bounded organelle. Clear? And number two, the second component of Golgi apparatus is the Golgi vesicles. So these are spherical fluid filled membranous structures, usually containing the packed or finished products. Clear? So that are the Golgi vesicles. And here there is another terminology which is very important regarding short questions. That is, what is Golgi complex? Golgi apparatus को तो हमने define कर लिया. A set of flattened sacs. Clear? Flattened membrane bounded stacks or sacs which are called, यहाँ हम इसको कर सकते sac, ठीक है? और इस stacks की शक्ल में होंगे. Stack का मतलब pile. Pile मतलब कैसे एक के ऊपर एक. Okay? So what is Golgi complex? So Golgi complex is the Golgi cisternae plus the Golgi vesicles. That is equal to Golgi complex. Clear? So that is an important short question. What is the difference between Golgi apparatus and Golgi complex? So the Golgi apparatus along with its associated vesicles, that is called as the Golgi complex. Clear? We can also define it as Golgi apparatus along with associated vesicles. That is also the definition for Golgi complex. Okay. Now its faces of the structure faces of Golgi apparatus. So as far as faces are concerned, it has got two faces. The first one is the forming face. Okay. And that is basically the outer convex. अभी परेशान नहीं होना, अभी मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, इसको सबको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंटेंट को देख लें. द आउटर कॉन्वेक्स फेस which is continuously being formed by the fusion of vesicles coming from
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो वहाँ से बडिंग के जरिए जो वेसिकल्स आ रही होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहा जाता है। वो मुसलसल फ्यूज हो रही होती हैं आउटर एंड के ऊपर, आउटर फेस के ऊपर, एंड दे आर मेकिंग द फॉर्मिंग फेस। क्लियर? तो याद रखिएगा जो फॉर्मिंग फेस है दैट इज कॉन्वेक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द एमसीक्यूज। द सेकेंड फेस इज the maturation or maturing phase. So maturation phase, that is basically the inner concave phase from where the cisternae form blebs and bud off as Golgi vesicles, which contain the finalized or finished products. That phase is called as the maturation phase. Yeah. Now I'm going to draw its diagram. So these are the cisternae. So over here, you also have to draw it when it comes in your exams in long question. Clear? So that is important. So that is basically the direction
of incoming transport vesicle from the smooth endoplasmic reticulum. And here it is released. So dear students, so this is the transport vesicle from smooth endoplasmic reticulum. Here it is fusing with this outer end. So this one is the forming phase. That's outer and it is convex. Convex surface किसे कहते हैं? जो बाहर की तरफ उभरी हुई हो, like this, ठीक है, इस तरह से जो बाहर की तरफ उभरी हुई हो उसे convex कहते हैं. जो अंदर की तरफ ऐसे dipped हो, मतलब कि थोड़ी सी like this one, अंदर की तरफ धसी हुई हो, उसे हम concave surface कहते हैं. So ये बाहर वाली convex है इस तरह से, ठीक. और यहाँ पर देख सकते हैं ये उनसे ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स में से जो प्रोटीन पार्टिकल्स आए थे वो यहाँ पर ये गोल्जी अपरेटस के अंदर पहुँच चुके हैं और ये आगे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली बीइंग फॉर्म्ड. और यहाँ पे देखिए दीज आर द ब्लैब्स, दीज आर द ब्लैब्स एंड दिस इज द गोल्जी apparatus vesicle. Golgi vesicle. And this is basically the maturation phase. Clear? So that is maturation phase. And these are the vesicles. Clear? So this whole structure is the Golgi apparatus. और होपफुली अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. और एक और चीज़, ये बेसिकली दीज आर द सिस्टर्ने, दीज आर सिस्टर्ने. आप देख सकते हैं ये फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सैक्स है, ठीक है. सो दीज आर फ्लैट एंड सैक्स. अगर इसमें मैं सिर्फ एक को बाहर निकाल के दिखाऊँ, जस्ट वन, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ओनली, इट वुड लुक लाइक ये एक सैक है और इस तरह से पिच का हुआ. So this is a single cisternae, clear? So the single cisternae. और इसी तरह के इसके ऊपर पड़े होते हैं स्टैक्स की शक्ल में बहुत सारे सिस्टर्ने पड़े हुए हैं. तो एक पूरा स्टैक जो होता है ये बनाता रहता है सिस्टर्ने का, ये 1 2 3 4 इस तरह करके. दैट इज बेसिकली द गोल्जी apparatus. क्लियर? तो ये एक cisterna. This is a single. It is cisterna. Now, dear students, what is its function? The most important function is cell secretions. The Golgi apparatus is concerned with secretions. Dear students, ये इसका कीवर्ड है, cell secretions. Clear? Cell secretions. जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पर आप you can easily select it. That is basically the Golgi apparatus. So जहाँ पे secretions की बात हो रही है, cell secretions की, वो that is the function of Golgi apparatus. And what are cell secretions? So secretions are the products formed within the cell
on ribosomes and then transported via endoplasmic reticulum, then to Golgi apparatus, and then to exterior of cell by exocytosis. Clear? So this is how this occurs. And the Golgi apparatus, makes the finished products and pack them in membrane bounded vesicles, which are called as the Golgi vesicles. Clear? And one more function, the most important function also, one of the most important function, that is Golgi apparatus also modifies lipids and proteins by adding them with carbohydrates and make glycolipids and glycoproteins. Clear? और एक और चीज़ याद रखनी है, very very important. The cell secretions are mostly glycoprotein in nature. Clear? So they are glycoprotein in nature, the cell secretions. For example, the mammalian pancreas secrete granules that contain the digestive enzymes. Clear? So one of the major function is, तो dear students, जहाँ पर सेल सिक्रीशन चाहिए, जहाँ पर जैसे पेनक्रियाटिक जूस है इन पेनक्रियास, इस तरह से वहाँ जहाँ पर जैसे गैस्ट्रिक जूस है, तो इनके जो सेल्स होते हैं वहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस होता है, सबसे पहले क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए आएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर पोर में से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इट मूव्स टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वहाँ से ये बड ऑफ होगा, वहाँ से उसकी बडिंग होगी, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की शक्ल में वो जो प्रोटीन्स बनी हैं वो आएंगी, और ये जो फॉर्मिंग फेस है उसके साथ फ्यूज़ करेंगी. क्योंकि गोल्जी अपरेटस ने इसको पैक करना है, इससे पहले कि ये सेल में जाए या सेल से बाहर जाए, जहाँ पे भी जाए सेफ्टली पहुँच जाए, तो उसको पैक करना ज़रूरी है. तो इन प्रोटीन्स को फिर इस गोल्जी अपरेटस में की जो फॉर्मिंग फेस है वहाँ पर इसके साथ ये फ्यूज़ करती हैं, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग. यहाँ पर इनकी फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इनको ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल. तो फाइनली यहाँ से ये ब्लब्स बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली यहाँ से भी बड ऑफ करते हैं. सो दिस इज़ द गोल्जी वेजिकल और द ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्रॉम द गोल्जी apparatus. So this is the relationship between, ये याद रखिएगा, between the relationship between endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and
द सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दे आर एक्सक्रीटेड और ट्रांसपोर्टेड आउट। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।